Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you guys? So now we are starting the last topic of our course of power electronics. So that topic is three-phase inverters, and we'll look into 180-degree conduction angle. So what is 180-degree conduction angle? We'll just come to it. First is the important aspect of the circuit. So how we make it and then how we number it, that is important as far as its working is concerned. So you can see that the configuration is almost same as of full bridge single phase inverter. Only we have now added another third phase leg or third half bridge to the configuration, and now first phase leg, midpoint of the first phase leg becomes phase 1, midpoint of the phase leg 2 becomes phase B, and midpoint of phase leg 3 becomes phase C. So if you remember the electrical machines course, and there you know that three-phase supply has 4 wires, right? Whereas in our system, in this inverter, we only have 3 wires. So then what can we say about this? So this is not the load, this is basically the power. This is the phases, phase A, B and C, and this is A, B and C. So this is how the actually I have drawn it not correct. Let me erase a little bit. So let me write it down like this. So this is phase A, phase B and phase C. So we have only 3 wires. So, and what about the neutral points in this case? We don't have any neutral points in case of 3-phase inverter. And if we look at the connection possibilities, we have 2 types of connections, Y and delta. So in case of Y, we have a neutral point, whereas in case of delta, we only have 3 cables, 3 terminals, 3 connections. So therefore, this 3-phase inverter is connected in form of delta. And the 3 wires we are getting, they are the 3 phases of this delta inverter. ठीक है, ये point clear हुआ? Okay. So now left side is the same. We have a DC supply. We have 2 capacitors, and these 2 capacitors are here to minimize the high frequency current harmonics, which are generated on the inverter side, but they come back to the DC supply. So these capacitors, they consume the high frequency current, the ripple current, and then the DC current goes to the supply. So now the important thing is how we number the switches. So if you remember the rectifier circuit, we had D1, D3
and D5 on the top. So this is the same scenario, and you can consider that we have rectifier on this side, and along with that we have, in parallel to the diodes, we have switches. Okay. So if you look at it carefully, and that is if the current flow is from AC side, then these diode, they act like a rectifier. Okay. So if supply is coming from AC side, then it would be rectified and stored in the capacitors or in DC source if it is able to absorb the power. ठीक हो गया? So now to invert from DC to AC, we have these switches connected, and the numbers are in same order. So we have odd numbers 1, 3, 5 on the top, and then even numbers and 4, 6, 2, the 2 being last one. So what kind of benefit we get out of this numbering is that we will have a sequence maintained while we look at the conduction angle from 0 to 180 degree or 0 to 360 degrees. Okay? So that is we are going to get in the next slide. So these are the gate signals which we are going to give to the switch of each numbered 1, 2, 3, 4, and 5 and 6. So we have G1, G2, G3, G4, G5, and G6. And if you look at the gate signal, you can find out that this gate signal is alive for 0 to 5, that is 180 degree. And from here it comes 180 degree conduction of 3-phase inverter. So we are providing the gate signals, the PWM signals, which are non-zero for 0 to pi, and then they are 0 from pi to 2 pi. Then comes the gate signal 2 and so on. So let's first look at the gate signal which is opposite to the Q1, and that is Q4. So G1 and then G4 is from pi to 2 pi. So these are the opposite gate signals because G1 is on the top switch, high side switch, and G4 is the low side switch. Similarly, if you look at the next phase, which is Q3 and Q6, so there should be a difference of 120 degree. So between G1 and G3, there's a gap of 120 degrees, 2 pi by 3, because we want the phase B signal generated in such a way that it has a phase difference in the voltage waveform from the phase A. 120 degrees का जो phase angle है, that is maintained because of the switching signal. And then G6 is the opposite to that. So therefore, from 2 pi 120 to 180, so this is 300 degrees. So G6 start from 300 degrees, goes up to 2 pi 60 degrees, and then comes 60 degrees is till 2 pi, and then remaining 120 degrees comes repeatedly from 0 to 120 degrees.
ठीक है. And then comes the phase 3, which is again जी please. जी G6 वाला सब दोबारा होता है. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर, यानी कि ये जो Q1 और Q4 है, दे आर गोइंग टू जनरेट फेज ए. ठीक है, और हमें पता है कि फेज ए क्या होता है. फेज ए शुड बी लाइक दिस, साइनोसॉइडल वोल्टेज. ठीक है, देन देयर शुड बी फेज बी, और फेज बी का जो फेज एंगल है दैट शुड स्टार्ट 120 डिग्री डिले के साथ. ठीक है, एंड देन कम्स द फेज सी, which is further 120 degrees delayed. Okay, so these are three phases we want to generate from three-phase inverter. Okay, so how we are going to generate it? By giving the PWM signals to each and every phase leg or half bridge, such a way that we have 120 degree phase delay in the PWM signal, in the signal that is given to the gate, so that switches are on and off according to that phase delay. Right? So therefore G1 and G4, they are two gate signals of same phase length, upper switch and lower switch. So upper switch is on for first half cycle for 180 degree, whereas the lower switch is on for other half cycle 180 degrees from pi to 2 pi. Similarly, then comes the other phase, phase B, for example, and that is sorry, G2 and G5 and G3 and G6. So let me change the color. So G3 and G6, they are together. So second phase is because of the G3 and G6. So phase B, this red should be phase B. So therefore there should be a 120 degree phase delay between the PWM signal. Okay, so it starts from 120 degrees and goes up to 300 degrees. So 2 pi by 3 से start होगा and it goes इसमें हम add कर देंगे pi. Similarly, the phase C, which is G2 and G5, this has again 120 degree phase delay from phase B. So phase B starts here with 120 degree delay, and then G5 is the top one. So therefore this again starts from 120 degree delay from phase B. So therefore this starts actually at 240 degrees. ठीक है, so this is phase C, and this is G5 is the upper signal and G2 is the lower signal. So therefore you can see that G2 is opposite to the G5, and G5 starts from 240 degree, goes up to 360, which is 120 degrees, and further 60 degree comes from 0 to 60 degree. Okay, because it's a periodic signal. All the PWM signal must be periodic. Okay, so therefore it comes like this. And where G5 stops, there G2 starts coming up. So
So G2 is on from 60 degrees and then so on. So if the numbering is kept constant, if we have Q1, Q3 and Q5 on the top and Q4, Q6 and Q2 on the bottom, if the numbering is same, then you can see it's very easy to draw the PWM signal. How? That is very simple. G1 is starting from 0 to pi, 180 degrees, and then there is a 60-degree delay in further 2, 3, 4, 5, 6 PWM signals, gate signals. Okay? So G1 or G2 means 60-degree delay. Then there is a 60-degree delay between G2 and G3. Similarly, between G3 and G4, 60-degree delay. Then from 4 and 5, we have 60-degree delay. And between G5 and G6, there is a 60-degree delay. So in this way, we can easily plot the PWM signals for three-phase inverter. ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने जो नंबरिंग है वो सही तरह याद की हुई है, सही तरह रखी हुई है. ठीक है, if sequence is maintained, then it's very easy to memorize the PWM signals. Now let's find out how we are going to generate the line-to-line voltage. What is line-to-line voltage? Line-to-line voltage is basically difference between VA and VB. Okay, so when we have this VA, that means with respect to some neutral point, or in our case maybe 0 point. Okay, and this line-to-line voltage is going to be VAB. So sequence would be maintained VAB, and then VBC, and then VCA. Okay, and the difference would be always like VBC is VB minus VC. Then VCA means there is a difference between VC minus VA. Okay, so keeping this in mind, let's now draw the waveform of line-to-line voltage, and we have here VAB and VBC. So we will draw a third line here, which is going to be VBC based on our discussion. So let's now find out what we are going to get according to the PWM signals and according to one section, because in as you can see that there is a 60-degree delays in all the PWM signals. So therefore after each 60 degrees there is a delay in the combination of switches or gate signals. So at one time, that is 0 to 60 degrees, we have basically 3 switches on, and we have to see when those switches are on what voltage we are getting at the midpoints, and that is going to be the phase voltage. Okay, so let's look at the first section, and that is the 60 degrees. 0 से लेके 60 degree तक we have to see which gate signals are on. Accordingly, those switches are going to be on. So in first 60 degrees, we have G1, G5 and G6 on. So let's look at G5, G6, G1, Q1,
G6 and Q5, G5, Q5. So in 0 and 60 degrees, we have 3 switches on. And when these switches are on, we will find out what kind of voltage appearing across the A point, B point and C point. ठीक है? Okay. So now let's 60 डिग्री में ऐसे जी दोबारा देख लेते हैं. हमारे पास जो गेट सिग्नल 0 से 60 डिग्री के दरमियान ऑन है, दे आर G1, G5 and G6. ठीक है? तो अकॉर्डिंगली Q1, Q5 and Q6 these switches are on. तो हमने अकॉर्डिंगली देखना कि यहाँ पे वोल्टेजेस क्या है. ठीक है? तो लेट्स से Q1 is on, that means कि this point is short circuited and therefore we have the same voltage on the positive side of the DC voltage coming at the phase A, and therefore it is going to be Vs. Point समझ आया? Because this switch is on, और अगर हम इसको ideal switch consider करें, then there is no phase difference, voltage difference over here. ठीक है? So same voltage, this voltage is going to appear over here, right? Okay. Now Q6 is on, so therefore this point is short circuited and therefore the ground terminal is clear and it appears on the phase B, so therefore it appears 0 over here. Okay? And then third switch is on and therefore the voltage which comes to the VC is Vs. ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी, इज इट क्लियर? सर एक 6 जब ऑन होगा तो वी भी किस तरह 0 होगा? जब ये G6 ऑन होगा तो ये मिड पॉइंट को कनेक्ट कर देगा ग्राउंड के ऊपर. ठीक है? देयरफॉर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम बेसिकली वोल्टेज कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? वो वी आर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस A एंड द ग्राउंड. ठीक है? So this A and ground voltage is going to be Vs in phase A, 0 in phase B and Vs in phase C. ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 और 60 के लिए VA is equal to Vs, VB is equal to 0 and VC is equal to Vs. Now we need to find out the line voltage. So difference between A and B, VA minus VB. So that is going to be VAB. VA minus VB is equal to Vs minus 0. So therefore it is going to be Vs. ठीक है? अब देखें यहाँ प्लॉट कैसे है. This is Vs for first 60 degrees. Then comes VBC, second phase VBC, and that is VB minus VC. ठीक है? So VB is 0, VC is Vs, so therefore resultant is minus Vs, and therefore the line voltage we have minus Vs for first 60
degrees. Now we can find the VCA. VBC हमारे पास already है. This is VBC. So VCA. Therefore, this is going to be the difference between VC and minus VA. So let's find out VC minus VA. This is VS and this is also VS. So VS minus VS is going to be 0. Therefore, for VCA, first 60 degree is 0. Then we have to see whether the voltage goes positive or voltage goes negative in next 60 degrees. Okay? So now let's go other 60 degrees from 60 to 120 degrees and see which gate signals are on. So in this case we have G1. Let's change the color. Okay. So now we have G1, G2 and G6 PWM signals which are on. So therefore now we have Q1 on as before, Q6 on as before, and now we have this Q2 on and Q3 is off. Okay? So let me erase the before. So now Q1 is on, Q6 is on and Q2 is on. Okay? So we are looking at the time interval and therefore deciding for ourselves which switches are going to be on and what voltage we are going to get. Okay? So now let's look at the voltages. So because Q1 is on, upper switch is on, therefore we will get VS at phase A. Lower is on in second phase, therefore VB is going to be 0. And lower switch is again on in third phase, so therefore VC is going to be 0. So we need to get phase voltage, line voltage A and B. So this is phase difference between VAB, and VAB is VS because VS minus 0 is going to be VS. So therefore this is going to be VS for next 60 degrees. What about VBC? VBC, VB is 0, VC is 0, so therefore VBC is 0 as well. So therefore, after getting this negative signal, now VBC is 0. Okay? And what about VCA? VC itself is 0. 0 minus VS. So we take it like this. Voltage difference between 0 minus VS is VCA. So that is minus VS, and therefore it is going to be like this for 120 degrees. Point clear होगा? Sequence समझ आ रहा है? Yes. Okay. Let's now go for third one. ठीक है, अब third में आप मेरी help out करें. So look at this signal. So which three gates are on? In G1, 120 से लेके 180 तक कौन कौन से गेट सिग्नल ऑन है?
G1, G2, G3. G1, G2, G3, वेरी गुड, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमने इसके साथ स्विचेस को भी ऑन करना है। सो G1, G2, G3, ठीक है। सो मैं प्रीवियस वाले इरेज कर देता हूँ। चलो, so now we are following green color. So G1, G2, G3, that is Q1, Q2 and Q3. So therefore VA is going to be again VS. VB is now changed. So VB is in this case is now VS. VC is same 0. Okay. So let's now write it down for third section, which starts from 120, goes up to 180. So what is going to be VAB? On the line. 0. Very good. Because VA is VS, VB is VS, so therefore both voltages difference is going to be 0. What about VBC? VS. VS, very good. What about VCA? वो भी VS है। जी, VS है। VS लेकिन नेगेटिव साइन, ठीक है। Because we are taking it, looking it from zero side. हमने जब VCA को देखना है, this is difference between VC and VA. Therefore 0 minus VS, ठीक है। So therefore VCA is going to be minus VS. तो अब इन तीनों को हम थर्ड सेक्शन में प्लॉट करेंगे, 0, VS and minus VS. So in this case we have 0. This is VS. And this is going to be minus VS. सीक्वेंस समझ आ रहा है ना? ठीक है। चल अब हम ले लेते हैं फोर्थ स्टेप और लेट्स टेक पर्पल. So this is the fourth section from 180 to 240, and which gate signal is on in this case? We have G2, G3 and G4, right? So let's look at G2, G3 and G4. So now we're following the purple line. So therefore VA is going to be 0. VB is going to be the same VS. And Q2 is going to be same 0. So now let's find out the fourth section voltages from 180 to 240. Okay. So what about VA? Sorry, VAB. Minus VS. Minus VS. Very good. Minus VS. What about VBC? VS. VBC is 0. Very good.
And what about VCA? सर VBC VS नहीं होगा सर? VBC जो है वो कितना है, सॉरी ये VS होगा, और VCA is 0. Okay, so now let's look at, so this is VAB is minus VS, so now it is minus. VBC is VS, so this is VS, and VCA is 0, so therefore it is 0. Okay, so this is how we are going to get the working of three-phase inverter and draw the line voltages. ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा अच्छा, अब रिगार्डिंग दी स्विचिंग स्टेट्स, ठीक है, सो नाउ वी हैव switching, now we have 3 half bridges, so therefore we will be following 3 digit switching state, और 3 डिजिट में टोटल कितने आ जाते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन? 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है, और उन 8 कॉम्बिनेशन में से जो 2 कॉम्बिनेशन होंगे दे आर 0 स्टेट्स, और वो होंगी कौन सी? जिसमें सारे अपर स्विचेस ऑन होंगे या सारे लोअर स्विचेस ऑन, ठीक है, कैसे? यानी कि अगर हम सारे अपर स्विचेस को ऑन कर दें तो फिर क्या होगा? VA is VS, VB is VS, VC is VS, तो तीनों सॉरी तीनों के फेज VAB देखें, VS माइनस VS 0, फेज VBC देखें, VS माइनस VS, एंड VC देखें, VCA VS माइनस VS, सो तीनों जो स्टेट्स होंगी वो 0 हो जाएंगी, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड 0 स्टेट, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमारे जो स्विचेस ऑन हैं दे आर लोअर स्विचेस आर ऑन 4, 6 एंड 2, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब है कि अपर स्विचेस ऑफ, लोअर स्विचेस ऑन, ठीक है, तो 4, 6, 2 स्विच दे आर ऑन, यानी कि लोअर स्विचेस ऑन होंगे, और लोअर स्विचेस ऑन होंगे तो तीनों के वोल्टेजेस जो होंगे वो 0 आएंगे, सो देयरफॉर वी डोंट हैव एनी वोल्टेज एट द आउटपुट, सो हमारे फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 0 स्टेट। सिमिलरली जैसे हमने पहले बात की, अगर मैं सारे अपर स्विचेस ऑन कर दूं, that is the state of 1 1 1, so 1 3 and 5 these switches are on, और सारों में वोल्टेज आ जाएगा VS, so VS minus VS becomes 0 for all line to line voltages, ठीक है, उसके बाद फिर obviously हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, then we have 0 1 0 0 1 0 1 1, then 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and finally 1 1 1, ठीक है, तो in these 8 states, 2 states are the 0 states and remaining 6 states are useful, they are generating the line voltage, ठीक है, सो हमारा जो 180 डिग्री सीक्वेंस है
इसके अंदर क्या आप ढूंढ सकते हैं कि कोई जीरो स्टेट आ रही है कि नहीं आ रही? Can you find zero states in 180-degree conduction angle? जी, can you find? You will not find this zero states in 180-degree conduction angle. ठीक है, इसके अंदर ये वाली चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल स्टेट है। तो इसको अगर हम किसी तरीके से, जैसे 180-डिग्री कंडक्शन एंगल में जीरो स्टेट जो है वो 000 और 111, दे आर both are avoided. So that is why we are only using 6 non-zero states to generate the line-to-line voltage. ठीक हो गया? Now comes the phase voltage. आगे हम जो कनेक्शन करेंगे, because as we have discussed, the inverter is going to be connected like delta, and therefore we are going to have 3 terminals A, B and C. ठीक है? So with these 3 terminals we can connect the load connected in delta, as well as we can connect the load which is itself connected in Y. ठीक है? So let's connect a Y load. So this is how a Y load is going to be connected with the inverter with the delta. So what is the property of delta about line to line voltage and phase voltage? G. For delta connection, what are the properties of this connection type? The line voltage is equal to phase voltage. ठीक है? So line voltage कहाँ पे होगी? VAB, जो अभी हमने find की थी, and same is the phase voltage, because A is the phase and B is the neutral point if we consider one phase. And second property of this line current is going to be under root 3 times the phase current. We have to know that because inverter is connected in form of delta. ठीक है? So that means कि ये अगर phase current है तो ये line current होगा. ठीक है? That means कि अगर ये phase current किसी एक switch में से आ रहा है तो switch का जो current होगा, यानी कि अगर मैं क्योंकि switch जो है वो phase में लगा हुआ है, ठीक है? Therefore I would say that transistor current is going to be
√3 टाइम्स लेस देन द लाइन वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पे लाइन करंट देखूं IA, ठीक है, सो IA इज गोइंग टू बी √3 टाइम्स लार्जर देन IQ। पॉइंट समझ आया? Yes. ओके, ठीक है। सो ये चीज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये चीज हमने याद रखनी है। ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाई कनेक्शन? सो लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, and line current is equal to the phase current. IA is equal to IAN, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है दिस इज N पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। सो इस ब्रांच के अंदर जो करंट आएगा दैट इज इक्वल टू दी लाइन करंट, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है और जो वोल्टेज यहाँ A और N के दरमियान अपीयर हो रहा है दैट इज, उसके दरमियान जो रेशो है दैट इज √3, ठीक है। सो V लाइन इज बेसिकली VAB, whereas it is √3 times larger than VAN, ठीक है। So accordingly we are going to find the phase voltages of the load side, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर का तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर है। इन्वर्टर इज कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है। तो फिर हमने देखना है कि लोड अगर हमारा बैलेंस लोड है, तीनों की रेजिस्टेंसेस सेम है, तो फिर तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा, फेज वोल्टेज क्या होगा और उसकी वेव फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क। So let me first explain it over here, ठीक है, because we have to connect the supply, DC supply with the loads, so therefore we need to be very clear about that. So phase load is here, phase B resistance, phase C resistance, and this is the neutral point, ठीक है। So in this sequence Q1 is on, Q6 is on and Q2 is on, ठीक है। तो इस करंट कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बने। सो Q1 is on, Q6 is on, Q2 is on, ठीक है। तो DC सप्लाई कैसे कनेक्टेड होगी विद द लोड्स? सो VS इज कनेक्टेड विद फेज A, जिसको आप कह लें RA, RB, या सॉरी हम इसको VA कह लें, ठीक है। सो VAN
VBN और VCN, ठीक है। Okay, so VA is connected with the supply, so VA resistance and neutral points. Then we have other two resistances connected to the ground. ठीक है, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें ये सर्किट सही है। So this is phase, this is A point, this is B point, and this is C point. हाँ जी, कनेक्शन सही है। And this is the neutral point. What about the voltage of VAN? VAN हम कैसे फाइंड करें? ठीक है, पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये क्या बनेगी, राइट। ठीक है, क्योंकि टोटल सप्लाई हमारे पास है VS। हमने देखना है कि इस इधर वोल्टेज कितना आएगा और इधर वोल्टेज कितना आएगा। ये दो रेजिस्टेंसेस ऐसे लग रहा है कि ये पैरेलल में है, राइट, क्योंकि दोनों एक ही पोटेंशियल पे कनेक्टेड हैं। इनका एक टर्मिनल भी न्यूट्रल पे कनेक्टेड है और दूसरा जीरो पे कनेक्टेड है, सो इनकी पोटेंशियल जो है वो सेम है। So now let's find out what is the value of VAN. ठीक है, so if you look at the resistance which is connected on the on AN side is R, and what about the total equivalent resistance? So because resistances, they are connected in like this. So this is positive side, this is negative side. So these two resistances are equal and they are connected in parallel. So therefore the equivalent resistance is going to be R by 2. So R by 2 connected with the R gives us the total resistance like this. So R plus R by 2 will have 3R by 2. ठीक है, so this is the total resistance 3R by 2. So this is the equivalent resistance. So R is cancelled out with R, 2 comes on top, and the total supply we have is VS. So this is the VAN 2 by 3 VS. जी, समझ आया? सर ये R2 आपने किस तरह लिखी है? जी, सर R2 आपने किस तरह ये R2 मल्टीप्लाई 2 से किस तरह? कौन सा R2? ये आप ये R by 2
देखे ना, ये भी No, आर sir, है, ये ऊपर ये मिरर सकते हैं। ये भी आर है, ठीक है, और ये Yes. दोनों नेगेटिव टर्मिनल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? When resistance is equal and they are connected in parallel, equivalent comes out to be half of the R, right? Yes. ठीक है, so therefore we can write it down as R by 2, और ये हमारे पास है R. तो total equivalent resistance between plus and minus terminal, that is the R equivalent. ठीक है, 3 by 2 R, और वो जो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी A और N के दरमियान है, दैट इज ओनली R. वी आर लुकिंग दिस वोल्टेज, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल R इक्विवेलेंट. ठीक है, सो R डिवाइडेड बाय दिस R इक्विवेलेंट एंड द सप्लाई वोल्टेज वी हैव Vs. सो VAN इज गोइंग टू बी 2 by 3 Vs. समझ आ गई? Yes. So now we need to find out VBN, और अगर हम देखें VBN तो N जो है वो हायर पॉइंट पे है, ठीक है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द DC सप्लाई, एंड N कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द B टर्मिनल विच इज एट द जीरो पोटेंशियल और एट द ग्राउंड पोटेंशियल. ठीक है, so therefore if we are looking potential from B to N, it is going to be -1. सही है, and because here we have Cn, so therefore VCN is going to be equal to that, because both resistances, they are connected in parallel, so their potential should be same. ठीक है, and negative. So now the supply voltage is Vs. यहाँ पे अब हमने वोल्टेज देखना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस. So R equivalent is R by 2 and total is 3R by 2. So R cancelled, 2 cancelled, so we will get minus Vs by 3. जी समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूं? Yes, sir. ओके, तो देखें अब हमने VAN जो है वो फाइंड कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट VBN एंड VCN, और चूंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो 2 घंटे. So both resistances are connected in parallel. ठीक है, so therefore VBN is equal to VCN. ये बात एक तरफ हो गई. दूसरा अब इनका नेगेटिव पोटेंशियल. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये साइड है हाई पे और न्यूट्रल होगा मीडियम पे, और जो B और C पॉइंट्स हैं ये होंगे जीरो पे, यानी कि लोएस्ट के ऊपर. ठीक है, सो देयर, लेकिन हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं B to N, फेज वोल्टेज इज फेज टू N न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है, सो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव वोल्टेज. अब ये फाइंड कैसे करने? बिकॉज वी आर measuring the voltage of resistances which are connected in parallel,
So their equivalent resistance is going to be R by 2 and divided by total resistance multiplied by the supply. So we get minus Vs by 3. ठीक है? Okay. So now okay. So now we have to find out कि ये बेसिकली ये जो सीक्वेंस था जहाँ से हमने शुरू किया था ये किस टाइम सीक्वेंस में था, 0 से 60 पे था या 60 डिग्री से 120 पे था। ठीक है, तो हम देखते हैं गेट सिग्नल कौन से थे जो कि हमें Q1, Q6 और Q2 को ऑन करे। लेट्स लुक एट दी गेट सिग्नल। सो पहले में अगर मैं देखूं तो मेरे पास है G1, G5 और G6, ये वाला तो नहीं है। ठीक है, दूसरे में देखूं 60 से 20 में तो यहाँ पे मेरे पास है 1, 2 और 6, तो ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो फिर मैं आगे चल के ड्रॉ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। सो हियर यू कैन सी सर दैट ये हमने जो VA भी फाइंड किए तो उसमें ऊपर जो हम रजिस्टर लिए तो R2 हमने किस तरह लिए, मतलब ये R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होते हैं सर वोल्टेज जी, तो तो R1 हमारे पास R नहीं है। देखिए सारे आ रहे हैं ना, यस हमने देखना है कि जो बेसिकली बी और सी वाले आ रहे हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है ये दोनों बराबर है, ये वाला पोटेंशियल भी और ये वाला पोटेंशियल दोनों बराबर है। ठीक है, नहीं सर, यहाँ पे AN वाले की बात कर रहा हूँ सर, किसकी, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ ए एन वाली, सर। यस ए एन में इसमें देखें ऊपर आपके जो पास R जी, नहीं ये तो मैंने ये लिखा था ना कि ये 2 ऊपर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये R2 यस नहीं है, चलिए ये वो जो डिवाइड हुआ था वो ऊपर आ गया। हाँ जी, एनी सही हो क्वेश्चन? गया सही है, चलो यस ठीक है। अब इसको हमने जाके प्लॉट करना है, तो हमें पहले देख लिया कि ये बेसिकली किस एंगल के दरमियान था जो हमने फाइंड किया, तो उसको हमने उस तरह प्लॉट कर दिया। सो ये 0 से 60 का है, ये है 60 से 120। सो 60 और 120 में हमारे पास जो ए एन है दैट इज 2Vs/3। ठीक है, दिस इज 2Vs/3 और जो Bn और Cn है दोनों माइनस Vs/3। ठीक है, तो ये वाला माइनस Vs/3 और ये वाला जो है दिस इज 2Vs/3 माइनस 2Vs/3, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये अभी हमने फाइंड किया। सो ये 2Vs/3 आ गया और ये माइनस Vs/3 आ गया, और यहाँ पे भी आप देखें ये भी नेगेटिव में माइनस Vs/3 है। ठीक है, अब आपको मैंने तरीका बता दिया। सर इस ये दोबारा बताइए, ये जो स्लाइड है सर। ये देखना, ये हमने ये प्रोसेस समझ आ गया ना सर आपको? यस सर ठीक है, इसमें आपने अब देखना है कि ये Q1, Q6 और Q2 ये यस किस एंगल पे था, इस पे था या 060 पे था। ठीक है, तो वो आप गए गेट सिग्नल के ऊपर, गेट सिग्नल में देखा कि 1, 2 और 6 कहाँ पे आ रहा है। 1, 2, 6 जो है वो आपका ये 60 से 120 के दरमियान आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो प्लॉट करेंगे वो भी 60 से 120 के दरमियान होगा, VAN, VBN और VCN। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला जो था ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। सर, मतलब इसमें
जिस पॉइंट पे वो लोड रेजिस्टेंस जिस एंगल पे आएगा तो सिर्फ वही हाँ, हम शुरू में देखेंगे कि गेट सिग्नल कौन सा ऑन है, उसने किन स्विचेस को ऑन किया है, उसकी वजह से इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, ठीक है। और उस इक्विवेलेंट सर्किट से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि जो फेज वोल्टेजेस हैं ए और एन, बी और एन, सी और एन के दरमियान, वो क्या बना। तो ये हमारा बनेगा फेज वोल्टेज। सही हो गया। यस। चलो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक और फिर स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास। सर बस ये कोर्स खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास में थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे ताकि ये फेज यस वोल्टेज हमारा पूरा हो जाए और एक न्यूमेरिकल यस हमने सर। सॉल्व